तो हेलो एवरीवन। सबसे पहले टू ऑल ऑफ यू विजयदशमी की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं सभी लोगों को, सबको। एंड आई होप सबके लिए आगे का साल बहुत अच्छा रहे। सबकी करियर एस्पिरेशंस बहुत अच्छे से रहें। एंड यू लर्न यू ग्रो। ऑब्वियसली ज्ञान देने की मुझे जरूरत नहीं है कि यू नो गुड ओवर इविल वाली बात। बट हाँ, विजयदशमी इज नॉट ओनली अबाउट गुड ओवर इविल, इट इज ऑल्सो अबाउट हार्ड वर्क, परसिवेरेंस। श्री राम का परसिवेरेंस ही था, हार्ड वर्क था। उनकी पूरी टीम का हार्ड वर्क था, एंड दैट्स व्हाट यू मेड हिम सक्सीड बेसिकली। कहीं लेजीनेस नहीं थी, कहीं आलस्य नहीं था। तो वी नीड टू लर्न दैट ऑल्सो फ्रॉम हिम। ओके। ओके, सो आई हैव अनदर अनाउंसमेंट एज वेल, जो मैं बिल्कुल एंड ऑफ द वीडियो में करूंगा। छोटा सा क्विक सा अनाउंसमेंट है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, बट इम्पॉर्टेंट है। एंड दैट्स वन। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द with this version of video of ClinicalTrials.gov, basically on understanding clinical trials. So before I start, um, I day before yesterday I received a query, or yesterday I received a query from one of the um, she's an experienced person. She's been in touch with me for multiple things. Uh, Basically problem solving. She reached out to me a couple of times for problem solving, and then I try to support her or help her as much as I can. So, she yesterday shared with me uh, screenshots. Let me show you those screenshots as well. So these screenshots she shared with me, and her main question was that, Himanshu, why the study number decreased or increased, with the change in keywords. So let me show you two screenshots basically. So first screenshot is this, what she sent to me. Here, which is showing that, the results are shown for MASH, or sorry, metabolic associated dysfunctional steatohepatitis, or MASH, or NASH, or non-alcoholic uh, uh, steatohepatitis, phase 2 or 3, and interventional studies. Okay. And here the results are showing 14, but here the results are showing 82. Reason. She asked me what's the reason why there is a change in the number. Okay. So let me tell you the first important bit, what she did wrong, what was an error basically in this one. First and foremost, you should, I've always told this thing. First and foremost, you should go for is is uh, is the writing of keywords. Separate out keywords very efficiently. Before you start your search. So let me just share an example with you how to do that. Because I think this is not something. Again, this is not a rocket science, but it talks about your. I hope you can see my screen. So, for example, um, we are searching for metabolic. What was the name? Sorry.
Okay. See, now what I've done is, this is something which I knew, and uh, so I've put it here. I know that NAFLD, or non-alcoholic fatty liver disease, is also associated, or an associated term of NASH basically. MASH and NASH both are interlinked to each other. Okay. So I have what I've done is, so far I've done, used all I've placed all the keywords here. So why did I do that? The reason why I did this is because then in this case, there will be lesser chance of spelling mistakes. Um, I have very frequently seen this thing that, Himanshu, I have done this research, but results नहीं आए इसमें, और या रिजल्ट्स इतने ही आए हैं, एंड व्हेन आई सर्च्ड इट, वो उसमें रिजल्ट ज़्यादा आए, या वाइस वर्सा। द रीज़न वाज़ कि स्पेलिंग्स गलत थी। मेरे एंड पर भी थी, मतलब जब मैंने मान लो सर्च करा हो, तो बिकॉज़ मैं टाइप कर रहा हूँ, तो मैं टाइप करा है मैसेज, वो सॉरी, स्पेलिंग गलत हो गई। ठीक है, दैट्स वन थिंग। नाउ लेट मी जस्ट शो यू फ्रॉम द एग्ज़ाम्पल। 1 सेकंड, येस, वी हैव दिस, ओके। सो हमने अभी क्या करा, I will use all these words. चलो एक काम करते हैं, 1 सेकंड। Let's remove this. Let's search of the words which uh, this friend of mine, or this person has done. Okay. I'm not doing anything else. I'm just putting the keywords. With all these keywords, it showed me 1,992 studies. Okay, let's go with what she has done. Firstly, interventional. So let's look for interventional studies. If I look for interventional studies, it will show me 1,457 studies. Okay. Now, what I'm going to do is phase 2 and phase 3. It has given me 499 studies. Okay. How many results she has gotten? 82. And 14. I don't know why this one looks metabolic associated dysfunction. Okay, let me just check. That's what she has done done as a mistake. Let me just tell you. So, hmm, so we also did a same kind of mistake, but obviously our results were better for whatever reasons. So MASH is basically function.
Firstly, the spelling was a mistake, so which I've told you previously also. अभी भी spelling में mistake है. Oh, sorry. Yes, mistake है. But what it is speaking is big. And now I'll tell you what other mistakes she has done. So mash लिख दिया और mash NASH non-alcoholic. I don't know what she has done wrong because if I'm putting the same words in this one, I can tell you what was the mistake. The mistake was putting these wrong slash signs basically. So ये एक mistake था. But I'm not sure what else she has done wrong because उनको studies क्यों नहीं मिल रहे थे because she should get these studies basically. ठीक है. So that's how you do your research. Okay. I if I select industry again, I'm with industry also. It's 295 results basically. Okay. So this is a very important lesson for all of us that uh, अभी आपसे बात करते करते even I have done a spelling mistake, but yeah, that's what exactly I was saying. कि you know जब आप फर्स्ट टाइम मैंने जब लिखा था मैंने सही स्पेलिंग लिखी थी which I wrote in the word C, बट जब मैं उसको वहां पर टाइप करने लगा तो वो गलत लिख दिया. सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू दैट ये गलतियां होती हैं. सो वी हैव टू प्रीएम्प्टिवली स्टार्ट विद द प्रोसेस ऑफ जॉट डाउन द की नोट्स की पॉइंट्स बेसिकली और कीवर्ड्स. ये सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है बेसिकली. नाउ कमिंग बैक टू आवर यू नो what we wanted to do. Oh, sorry. Okay. ठीक है. सो अपन लोग लेट्स गो ऑन होम. ठीक है. ओके. सो आज हम ये असेस करेंगे कि यू नो again we have already spent some close to 10-15 minutes of this call on the and I don't have much time today. ओके. तो अभी एक सर्च का तरीका तो हमें समझ में आ गया कि हमें किस तरह से सर्च करनी है. तो आई थिंक आई bypass that thing and let me go into the deeper down details of let's see industrial. Okay, so let's go into the deep detail of each one or two studies and उससे समझने की कोशिश करते हैं कि कंसल्टिंग में हमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं फ्रॉम द क्लिनिकल ट्रायल परज्यूरी और व्हेन आई से सीआई स्पेसिफिकली. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज वी नीड टू सी दैट दिस इज नॉट येट रिक्रूटिंग स्टडी व्हिच मींस दिस स्टडी इज अ प्लान्ड स्टडी. इसने अभी रिक्रूटमेंट स्टार्ट नहीं करा है. बीआई ने आई कैन नो व्हाट्स द हु इज द स्पॉन्सर. इट्स बोयरिंगर. सो बोयरिंगर ने ये स्टडी जो है ये ClinicalTrials.gov पर डाल दी है फॉर दिस मॉलिक्यूल. बट उन्होंने जो है उसको स्टार्ट नहीं किया है अभी तक. Now, so this first important thing. Then is an acronym. Acronym is very important thing for as an identifier. Okay, liver age study. Then couple of days back, I was checking this study called AMPA-CKD, DAPA-CKD. So these are the unique identifier given by the company. These are called acronyms. Acronyms basically the short name of this specific study. So and they become famous over the time for this reason basically. These acronym become famous basically. So this now the study title. The study tests whether this molecule helps people with
liver disease called NASH or MASH who have moderate or advanced liver fibrosis. Okay. So these are in the bigger indication is the liver fibrosis, but within that, those people who have confirmed MASH or NASH basically. So अब ये लगेगा, अब ये समझ में आएगा कि इट इज टॉकिंग अबाउट अ लिवर फाइब्रोसिस। अब हर बार तो अब मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कि ये मैश की या नैश की स्टडी है? हो सकता है उन्होंने लिवर फाइब्रोसिस लिख रखा हो, देयर मस्ट बी अ स्टडी जहां सिर्फ लिवर फाइब्रोसिस लिखा हो टाइटल में। So how we will know that this is a specific MASH or a NASH study? So for that, we will go into the participation criteria. So when we go into the here, so in the left corner, if you see, you have different sections. You contact, participation criteria, study plan, collaborator and investigator, study record dates, and more information. Okay, you can expand the whole thing from here. You'll see, and you can collapse everything here. So if you collapse, see, if I collapse, this became shorter. This became shorter, but when I expanded all, see, it has given me a very description, a lot of description on this. Okay. So, अभी हम लोग we will see. So I was talking about कि how would we know? So one of the very important things within the clinical trial is the inclusion and the exclusion criteria. So where do you find that? You find participation criteria. So within this section, if you go, you'll see that they have given a detail about which patients to include, which patients not to include. So let's talk about first which patients to include. Male and female participants above the age of 18. So basically, this study is not meant for children. This is for age 18 plus adults, basically. Okay. Uh, Now, diagnosis of MASH. Um, I was telling you earlier that non-alcoholic fatty liver disease is an associated term basically, but we have not looked for it in this basically. But yeah, so NAFLD active score. So there is this NASH score, which is which is a set criteria basically, a diagnostic criteria I would say, which checks the liver. So you need to go into the, अगर आपको ज़्यादा जानना है कि what is the NASH criteria, how it is it's a point wise system basically. So in this NASH criteria is a point wise system, and based on that point wise system, if you have a score more than 4 in on the NASH criteria, then you are eligible to get enrolled in the study with at least 1 point of inflammation and ballooning each. So there must be some sort of again, those who have worked in NASH or MASH, they would know that this is again at least 1 point in inflammation and ballooning. So there must be some points in ballooning system. So वो describe करेगा. Fibrosis stage F2 and F3 proven by biopsy. So biopsy करके जो fibrosis की stage होगी उसको define किया जाएगा. अगर वो F2 और F3 है, so there is an and. I hope you can see this. So the connector is an and. So basically, अगर आपका स्कोर NAS एक्टिव स्कोर जो है वो NAFLD एक्टिव स्कोर जो है वो मोर देन 4 है, your fibrosis stage is F2 or F3 proven by biopsy, or now the another criteria is or कि या तो फाइब्रोसिस की स्टेज बायोप्सी से स्क्रीनिंग टाइम पर ली जाए, या फिर historical biopsy conduct हुई हो at least 6 months before the screening or randomization basically. So उन्होंने स्क्रीनिंग के टाइम और फाइब्रोसिस की जो बायोप्सी है उसके लिए उन्होंने एक और क्राइटेरिया दे दिया है कि उन्होंने 6 मंथ्स पहले अगर कोई बायोप्सी करवाई हो तो वो भी एलिजिबल होगी, और उसमें भी अगर F2 या F3 फाइब्रोसिस आ रहा होगा उसमें, या फिर रिसेंट बायोप्सी में F2 या F3 आएगा वो, एंड NASH स्कोर मोर देन 4 होगा, तभी पेशेंट रिक्रूट
किया जाए। स्टेबल बॉडी वेट, weight defined as less than 5% self-reported change in the body mass and uh, body weight in 3 months. So स्टेबल तब होगा, मान लो अगर उनका 3 महीने में बॉडी वेट जो है वो बहुत ज्यादा अप एंड डाउन हो रहा है, या मतलब लेस देन, सो यूजुअली नैश में पेशेंट्स का बॉडी वेट डिक्रीज होता है। सो लास्ट 3 मंथ में अगर उनका लेट्स से किसी का 40 kg है, 50 kg है, तो और अभी जब वो स्क्रीनिंग टाइम पर आए हैं उनका वेट अगर उस टाइम पर अगर 5% से ज्यादा रिड्यूस हुआ है तो प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम है। और अगर 5% तक रिड्यूस हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5% तक में मीन्स लाइक 2.5 kg तक अगर कम हुआ हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। विलिंग टू मेंटेन अ स्टेबल डाइट एंड सो दे नीड टू फॉलो अ स्टेबल डाइट and further inclusion criteria which a company has not detailed here, but yeah, those are the inclusion criteria. Now we'll talk about the exclusion criteria. What are the exclusion criteria? For example, सबसे पहले हम पॉइंट नंबर 2 के बारे में पढ़ते हैं। एनी हिस्ट्री ऑफ एविडेंस ऑफ एक्यूट और क्रॉनिक लिवर डिसीज अदर देन मैश। पेशेंट की हिस्ट्री में मैश के अलावा कोई और डिसीज, लिवर फाइब्रोसिस बहुत तरीके का होता है, तो यू नो अगर वो डिजीजेस हैं और या हिस्ट्री रही है तो पेशेंट एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है। हिस्टोरिकली डॉक्टर सॉरी फिर पहले वाले पॉइंट पर आ जाते हैं। एनी ऑफ द लेबोरेटरी टेस्टिंग शोज सीरम एएसटी और एएलटी एलिवेशन अपर लिमिट ऑफ द नॉर्मल, बेसिकली 5x टाइम तक, अगर 5x टाइम से ज्यादा 5x से ज्यादा है तो प्लेटलेट काउंट जो है वो 140,000 सेल्स पर मिलीमीटर में से कम है। एएलपी क्राइटेरिया 2 टाइम्स नॉर्मल से है तो इस बेसिस पर एक्सक्लूड कर दिया जाएगा पेशेंट को एट द स्क्रीनिंग टाइम अगर ये सब चीजें हैं तो। ठीक है। सो यू शुड हिस्टोरिकली हिस्ट्री ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोम फ्रॉम अनदर हिस्ट्री या प्लांट को लिवर ट्रांसप्लांट है, नॉट एलिजिबल। इनएबिलिटी और विलिंग टू अंडरगो लिवर बायोप्सी, अगर आप लिवर बायोप्सी नहीं करवा पाते हैं तो ठीक है। हिस्ट्री ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन और प्रेजेंस ऑफ decompensated liver disease, including hepatic. So again, portal hypertension है या liver की other diseases है। एंड स्टेज लिवर डिजीज है जिसका स्कोर 12 से अबव है। मतलब मॉडल ऑफ एंड स्टेज लिवर डिजीज स्कोरिंग होती है, उसका अगर स्कोर आपका 12 से ज्यादा है। ट्रीटमेंट में मेडिकेशन विच आर इंडिकेशन ऑफ ओबेसिटी ट्रीटमेंट अगर आपको मिल रहा है तो एंड और मिला है विद इन द 3 months ऑफ फ्री स्क्रीनिंग। अगर आपने 3 months से पहले उसको मिला था बट बंद कर दिया, देन यू विल बी एलिजिबल। At least that's what it says basically. I'm not claiming about this study. So, this is very important piece of information because one needs to understand which patients are included and which patients are not included. The reason. मान लो मेरा क्लाइंट है जिसका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही अर्ली स्टेज मैश डिसीज पर वर्क करता है, ये बहुत ज्यादा लेट स्टेज मैश डिसीज पर वर्क करता है। लेट्स जस्ट से बाय I mean, randomly example ले रहा हूँ। So for example, उसका my client's product is basically NAS score less than 4 basically. So इधर less than क्या नाम है NAS score more than 4 है, मेरा less than 4 होता है। So एक criteria अलग हो जाता है। It's an early stage basically disease. Okay. Patient population अलग है altogether. ठीक। उस बिकॉज वो स्टेज अगर वो होगा तो मे बी हो सकता है कि मेरे क्लाइंट के केस में बलूनिंग ना हो। ठीक है। फाइब्रोसिस की स्टेज भी जैसे F2 या F3 है, इस केस में मे बी वो F1 हो।
ठीक है, तो ऑल टुगेदर पेशेंट्स वो अर्ली पेशेंट्स हो जाते हैं। ठीक, सो अब अर्ली पेशेंट से मुझे क्या पता चलेगा? सो सी, मुझे ये पता चलेगा कि दिस प्रोडक्ट फ्रॉम BI, इट्स नॉट अ डायरेक्ट कॉम्पिटिटर फॉर मी एट दिस स्टेज बेसिकली। हाँ, फ्यूचर में दिस कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि ये प्रोडक्ट जब लॉन्च हो जाए, BI जो है फॉर इट्स हेल्थ स्ट्रैटेजी, फॉर लाइफ साइकिल मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, वो लोग जो है इसमें यू नो they try assessing it, or not just after, maybe in a parallel they are assessing it in the less than 4 score also। ठीक है, या किसी दूसरे क्राइटेरिया ऑफ मैथ्स में उसको कंसिडर कर रहे हो या नैश में कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो they become indirect competitors, which is very important for me to tell it to my client that boss, this could be an indirect competitor for you। So इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, हमें सबसे पहले इंक्लूजन क्राइटेरिया देखना हो सकता है कि इंक्लूजन क्राइटेरिया में मेरे अगेन इंक्लूजन क्राइटेरिया से बहुत सारी और इंफॉर्मेशन भी मिलती हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, I was doing it for okay, let me not so there is an IgA nephropathy drug, और IgA nephropathy drug मतलब being assessed है इस समय, और उसमें आपको एक वैक्सीन लेना पड़ता है। मतलब उसका एक साइड इफेक्ट है कि जो है आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, तो आपको जो है वैक्सीन लेना पड़ता है उसके लिए बिफोर गेटिंग रिक्रूटेड इन द स्टडी। अब प्रॉब्लम ये है कि and so yeah, that was for my client, but we were very we saw a couple of other molecules जिनमें वो वैक्सीन नहीं लेना पड़ता, because that's not a side effect which can be a problem for us। तो हमें ये टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन भी मिलता है इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया से। तो दिस इज within a clinical trial, this is one of the most important thing, which is inclusion and exclusion criteria, basically your eligibility criteria। Now, what are the other important things? So let's go on to the first part of the study over। सबसे important चीज, स्टडी स्टार्ट कब होने पर? So they are saying that it is expected to start in October, 12th of October 2024, which obviously अगर होता तो यहाँ पर चेंज हो जाता। So they will hopefully soon enough they will change this। Accordingly, they have estimated primary completion date, they have estimated study completion date, स्टडी कब कंप्लीट होगी, कितने पेशेंट्स रिक्रूट कर रहे हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स एन इंटरवेंशनल स्टडी, तो वो तो हमने फिल्टर में ही डाल दिया था, तो वी न्यू के दीज आर ऑल इंटरवेंशनल स्टडीज। एंड दिस इज अ फेज 3 स्टडी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज फेज 3 है, फेज 2 है, उसमें बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। ठीक है, नाउ दिस इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देन आपको यहाँ से पता चलेगा कि इंटरवेंशनल क्राइटेरिया ड्रग्स कौन कौन से हैं, स्टडी के अदर आइडेंटिफायर्स कौन कौन से हैं। सो इट इज रजिस्टर्ड ऑन CTIS, it is registered on WHO with this ID, and it's another ID. If you search it, you will get to know. One very important thing, ये 2-3 दिन पुरानी ही बात है। One of my team members, they saw the keywords। यहाँ स्टडी में ना कहीं पे keywords लिखे हुए थे। They saw the keywords and they included the study in the landscape basically। But that study was not expected to be included because कभी भी keywords से नहीं देखते हैं। ठीक है, यहाँ कभी-कभी keywords ज्यादा लिखे हुए होते हैं। We always supposed to see the condition, you always supposed to read about the disease, from here, and specifically the inclusion and exclusion criteria is the must। आप कहीं से भी keywords देखकर which more information में होते हैं यूजुअली keywords, आप वहां से देखकर नहीं। ओके, नाउ
the study will also have locations कि कहाँ recruit कर रही है. At this moment, this study is not recruiting. I'll show you another study which is recruiting, but this study is not recruiting. Okay. Then we have study design. Study design, again, an important criteria. क्यों? अगर स्टडी रैंडमाइज्ड है तो एफडीए का या रेगुलेटरी बॉडीज का कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है. ठीक है. इंटरवेंशनल मॉडल में पैरेलल है, क्वाड्र क्रॉस अलाइनमेंट है. मैंने इसके बारे में पहले बात करी है. इफ और अगर नहीं भी करी है या नहीं सुना है आपने तो यू कैन शुड गो टू द ग्लॉसरी सेक्शन एंड रीड अबाउट ऑल दीज अलाइनमेंट्स. मास्किंग, डबल मास्किंग है या ट्रिपल मास्किंग है या क्वाड्रपल मास्किंग. ठीक है. देन हाउ आर द एक्सपेरिमेंट आर्म. सो एक्सपेरिमेंट आर्म में आपको इसमें सबसे पहले पता चलेगा ड्रग का नाम. Then the important information is if it is a subcutaneous subcutaneous, what's the route of administration basically, other name of the drug, उसका comparator arm कौन सा है. So comparator arm is basically in this case is a placebo. ठीक है. Then how are you measuring? So prime endpoints. So there are two endpoints, primary endpoint. There are three endpoints, primary endpoint, secondary endpoint, and exploratory endpoints. So at this moment, we are talking about primary endpoints. अभी इसके बाद maybe next video में we'll talk about what are primary, what are secondary endpoints. So अभी इसमें primary endpoints हैं. These are the important endpoints. Why? Because based on these approval होता है. ठीक है. अभी आप देखोगे कि 52 weeks from the baseline and 52 week पर assessment होगा. So आप देखो, अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, so study is basically saying primary completion, it's after 7 years. Why after 7 years? Because see, up to 7 years. So long term assessment जो है वो 7 years पर होगा. But I'm more than 100% sure कि ये study जो है interim data लाएगी after 2 years basically. So this recruitment start होगा maybe in 2026 basically. They will come up with interim results which will be based on the part 1 of the study. You can see this part 1 of the study and उसके बेसिस पे वो लोग रिजल्ट्स पब्लिश करेंगे. देन मे बी दे विल गो और उसके अलावा जो भी पार्ट 2 में जो 2 साल का रिजल्ट होगा आउट ऑफ 7 years, 2 years का जो भी रिजल्ट होगा, ठीक है, उस क्राइटेरिया को और जो सेकेंडरी के क्राइटेरियाज हैं जो कि विच अगेन वी आर सीइंग के एट 52 वीक्स है बहुत सारे क्राइटेरियाज एंड मोर देन दैट एज वेल. तो उनको स्टडी जो है मतलब सॉरी बीआई जो है उनको यूज करके दे विल गो फॉर they will try to get an approval basically. Not try to, they will get it. They will file for it basically. Then approval or not वो तो results depend करेगा. ठीक है. So this is and again these are all again in important criteria. Now ये other details हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं which is important but again not really important for your deck creation or for the CI work specifically. हाँ, which I was saying keywords basically. So यहाँ देखिए liver disease लिखा हुआ है, liver cirrhosis लिखा हुआ है. So this study is not a liver cirrhosis disease study. It is a type of a liver cirrhosis, but it is not digestive system disease. It is not a digestive system disease, but yes, it is a type of it. तो इस तरीके के क्राइटेरिया so basically हमें फिल्टर आउट करना है. अगर आप अगर आप जो अगर आप मैंने digestive system disease सर्च किया होता this study would have been visible for me to me also. बट ये मेरे लिए वो नहीं है, मेरे क्राइटेरिया में नहीं आएगी बिकॉज मेरा क्राइटेरिया कुछ और है. So, that's the reason we get this information. We need to filter out what's that function. Okay. So, record history. I will show you record history in another trial because इसमें कोई record history शायद होगी नहीं. Yeah, there's no history of records. So, let me show you another criteria. Another trial, sorry. Okay.
Okay, let me just do one thing. Recruiting, एंड यहाँ से मैं इसको फेज 3 कर देता हूँ, जिससे कि हाँ, सो आई हैव डन दिस। जो मैंने फेज 3 और वो कर दिया था, तो मेरे पास ये स्टडी आ गई, ये रिक्रूटिंग स्टडी। ठीक है। अब मैं इस स्टडी को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसमें बस इतना बताऊंगा कि ये मॉलिक्यूल असेस हो रहा है विद कंपनसेटेड सिरोसिस ड्यू टू नैश। ठीक है। अकीरो थेरापेटिक्स कर रही है स्टडी को। दिस स्टडी इज looks like a global study, or probably a US. Let's see that. ठीक है। So you can see it on the interactive map. आप देखो मैप पर, तो ये अभी ऐसा दिख रहा है मुझे कि ये स्टडी सिर्फ, ओके, दिस स्टडी इज ओनली हैपनिंग इन द यूएस। ठीक है। यूएस एंड पोर्टोरिको में हो रही है। ठीक। तो अभी हमें इसमें सारी इंफॉर्मेशन है। तो फर्स्टली उसमें उधर हमें लोकेशन नहीं दिखी थी हमें उस स्टडी में, तो यहाँ हम लोकेशन से देख सकते हैं। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि देखो एल्बामा के बर्मिंघम में स्टडी हो रही है। ठीक है। देन टस्कन इन एरिजोना, एरिजोना में 2 साइट्स हैं, अल्कांसास में 1 साइट है। सो दिस हेल्प्स, ये इस बारे में किसी और दिन बात करेंगे, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, बट या दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर सम अदर रीजंस, बेसिकली कि कहाँ स्टडी हो रही है, डिपेंडिंग ऑन आपको क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है। सो दिस लुक्स लाइक अ नॉर्थ अमेरिका, सॉरी, दिस लुक्स लाइक एन North America study, basically, where US and Puerto Rico, probably they might also include more locations. I'm not sure, but हाँ, अभी के लिए Puerto Rico and US ही दिख रहा। ठीक है। These are the inclusion and exclusion criteria. You can see very specific, small cohort 1, cohort 2. There are 2 cohorts. Let's see what are those cohorts. Um, okay. So कोहॉर्ट 1 में कंपनसेटेड स्टेज 4 फिब्रोसिस पे है, जो नैश या मैश के वजह से हुआ, एंड बायोप्सी प्रूवन नॉन इन्वेसिव डायग्नोस्टिक, अच्छा, नॉन इन्वेसिवली डायग्नोस्ड, बेसिकली स्टेज 4। सो दीज आर इन्वेसिवली बायोप्सी प्रूवन, और इसमें बायोप्सी एंड नॉन इन्वेसिवली ऑन अदर क्राइटेरिया प्रूवन स्टडी वो है। ठीक है। अदर लिवर डिजीज को टाइप 1 अनस्टेबल टाइप 2 डायबिटीज वालों को इंक्लूड नहीं किया। ठीक है। ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ। वी वांटेड टू सी रिकॉर्ड ऑफ हिस्ट्री, सी यहाँ पर भी आ रहा है, एंड यहाँ पर। ओके, सो दिस इज ऑल्सो फेयरली न्यू स्टडी, बट इसमें एटलीस्ट हम कुछ हिस्ट्री देख सकते हैं। So for example, I click on this and this. I'll compare. In July when it was posted, and in August when it was updated. तब से अब तक में क्या changes हुए? So let's compare this. And it is very important. Okay. There are 2 ways of viewing it. One is merged view and one is side by side. I usually prefer a side by side view. मुझे थोड़ा this is my criteria, but yeah. And in side by side view, you can see this. Okay, record word verification, date change हुआ है। ठीक है। यहाँ last submitted QC criteria whatever. अब we want to see कि और क्या changes हुए थे इसके अंदर। ठीक है। Pretty much things look same। ठीक है। यहाँ तक सब कुछ सेम नजर आ रहा है, बट यहाँ चेंजेस आए हैं। यू कैन सी दिस चेंजेस के पहले ये सारी साइट्स थी। ठीक है। हाँ, कुछ ही साइट्स थी। अब ये साइट्स हो गई, दीज साइट्स, इसमें हो सकता है कि कॉमन साइट्स भी हो कुछ। सी, हाँ, कॉमन साइट्स हैं। सी, पहले सिर्फ 7-8 साइट थी, अब 40 साइट हो गई है। 40 साइट में पुरानी साइट्स व्हाइट में है। अगर कोई साइट्स रिमूव हुई होंगी तो वो रेड में होंगी, जैसे हमने ऊपर देखो। ठीक है। So this is how a study looks like, basically. And let me just try and show you another study, and after that we'll do the announcement.
Let me take a little bit of a global study, I think. This looks like a global study. This looks like a global study. 89 बायो ने करी है ये, ठीक है। इसमें 77 साइट्स हैं। लेट्स क्लिक फ्रॉम द इंटरनेशनल मैप। हाँ, यूरोप में साइट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में साइट है, एंड देन यूएस में साइट है। सो वी हैव दैट, ठीक है। मूविंग ऑन, अभी इसका हिस्ट्री चेक करते हैं थोड़ा सा कि कितना पुराना स्टडी है, सो दैट आई कैन शो यू सम रिपोर्ट्स, मल्टीपल रिपोर्ट्स। हाँ, नाइस। तो ओके, लेट्स सी दिस। सो फर्स्ट जब 2024 में मार्च में अपडेट हुई थी उसमें, और 13 मार्च को जब डाली गई थी, और 21 मार्च को जब अपडेट हुई है, व्हाट इज द चेंज? लेट्स कंपेयर दैट साइड बाय साइड व्यू, ठीक है। हाँ, सो नॉट येट रिक्रूटिंग से रिक्रूटिंग हुआ, नाउ यू कैन सी दिस थिंग, ठीक। इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। तो वील गेट टू नो कि कब रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुआ है। साइट्स हमने बताई थी, ओके। अभी और व्यू में जाते हैं इसके लिए, ठीक। अब फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट एंड थर्ड को अगर मैं करता हूँ, ओके। सो सी, फर्स्ट एंड थर्ड में मेरा उन्होंने स्टार्टेड पहले मार्च 2024 दे रखा था, बट उन्होंने बहुत स्पेसिफाई कर दिया कि 13 मार्च 2024 स्टडी स्टार्टेड एक्चुअल, ठीक है। एंड एक्चुअल एस्टिमेटेड था पहले, अब एक्चुअल डाल दिया, ठीक है। नाउ लेट्स सी और कुछ भी चेंज है कि साइट वगैरह, तो हाँ, ठीक है। अब ये मैंने फर्स्ट और थर्ड किया था। लेट्स सी फर्स्ट एंड लास्ट करके देखते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट, लेट्स कंपेयर। फर्स्ट एंड लास्ट में ये कुछ चेंजेस हैं, ये तो हमने बताई है, ऊपर पहले ही कर लिए थे। सो पहले ये इंफॉर्मेशन यहाँ नहीं थी, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड इन एंड एक्सपोर्टेड फ्रॉम द यूएस, नो, ठीक है। देन हमने कंडीशन को काफी डिफाइन किया है। दे हैव एडेड कंडीशन, और ज्यादा चेंजेस मुझे दिख नहीं रहे हैं। साइट्स काफी सारी ऐड हो गई हैं इसके अंदर, ठीक है। यू कैन सी फ्रॉम फर्स्ट टू नाउ साइट्स बहुत सारी ऐड हो गई, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू, एंड दे विल बी लाइक, अभी मैं आपको ये, और इट्स फर्स्ट को अगर मैं रिमूव कर देता हूँ, आई डू दिस, तो हमें पता चलेगा कि कितना चेंजेस हुआ है, कितना नहीं। सो ये चेंजेस हुए हैं, ये चेंजेस लास्ट चेंजेस हैं, ठीक है। सी, साइट्स सेम है, आपने देखा। सो इसका मतलब ये है कि साइट्स पहले ही मतलब ये देखिए, ये रिमूव हो गई है, ये ऐड हो गई, ठीक है। तो सो दिस इज हाउ यू बेसिकली असेस, ठीक, हिस्ट्री ऑफ इंटरेस्ट। सो अभी आज के लिए विल स्टॉप दिस बेसिकली, ठीक है। ClinicalTrials.gov पे मैं आपके साथ और भी एग्जांपल्स नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा, ठीक है। एंड विल लुक इनटू अदर registries also, like Udracity, India CTRI, and so on and so forth. So, lastly, I would like to tell you all that I was being approached by this company called uh, Academy of Healthcare and Pharma Analytics. So Academy of Healthcare and Pharma Analytics, it's a new venture. Some very enthusiastic people. They have started this venture. They are मतलब बेसिकली क्या है कि मेरा एंड उनका जो माइंडसेट है, वी सिंक्ड बेसिकली। सो दे हैव आस्क्ड मी टू बी अ मेंटर देयर। सो दे हैव डन दिस अनाउंसमेंट, you can see it on my I've reposted it basically. So this announcement. So basically, AHPA basically has this launched this mentorship program for freshers, for experienced people, and so on and so forth. And so do follow AHPA. So that's first thing.
Second thing is, if you are interested in this mentorship program, if you think I can add value in one-to-one mentoring to you guys, register with them. And yeah, and then we will, you know, their team will reach out to you, and yeah, you can reach out to them, and talk about, ask questions. Basically, if you have any questions, you can talk to me also. If you have any questions, I'll be very happy to answer those questions. If I don't know those questions, I'll check with the organizing team and get back to you. Uh, they have asked me to develop a couple of modules for them, specific modules for them. So I will be working on that also. So yeah, I'm going to. I feel that in videos ke alawa, one-to-one mentoring kind of, or not just one-to-one, a bulk mentoring kind of thing could be something which is useful, could be useful. So we can do that. हम वो करते हैं, ट्राई करके देखते हैं, आपको अच्छा लगे तो बताना, ठीक है. And so yeah, that's about it. So thank you once again. It was nice talking to you all. A very happy to share once again. And प्रार्थना करूंगा कि माँ सरस्वती की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे. ठीक है. You learn, you grow, you you advance in your life. And yeah, that's it. And take care. Watch out for the space for more videos. Drop comments. Uh, Please subscribe कर लो, because what I've seen is that people are viewing the videos, but they're not subscribing to it. Please subscribe कर लो यार, थोड़ा सा encouragement मिलता है कि हाँ, I'm making these videos, तो लोग subscribe कर रहे हैं. ठीक है. So happy to take any questions. If you have, drop in the message, drop in the mail, connect with me over LinkedIn and ask me questions. Thank you. Take care. Bye bye.